Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss on this new section 194R under income tax. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So section 194R, TDS on benefit or perquisite in respect to business or profession. This section 194R has been introduced by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji in this Union Budget 2022. So what's the purpose? What's the purpose of this section 194R? वैसे तो in every budget one or two new section had been or has been introduced in TDS. So this section 194R, what's the purpose? So let's take an example. एक example देखते हैं. In normal business course, many companies or the distributor or the dealer, they announce some scheme for their sub distributor or the dealer or the agent. So in our example, XYZ company, XYZ company, it can be individual, HUF firm, company, that we will discuss later on. So XYZ company एक scheme announce करती है for its dealer, distributor, sub distributor, किसी के लिए भी, कि अगर आप ये target, if you achieve this target, आपको हम यूरोप टूर प्रोवाइड करेंगे टू प्रमोट देयर सेल और द दिस इज फॉर ए स्कीम फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूटर एंड मिस्टर एक्स वो टारगेट अचीव, नॉट ओनली मिस्टर एक्स, काफी लोग टारगेट अचीव कर देते हैं, एंड देन एक्स वाई जेड कंपनी प्रोवाइड देम द यूरोप टूर. वो सारे एक्सपेंसिव बोर्न बाय द एक्स वाई जेड कंपनी. So this is one scheme. This is a background. Most of the cases in the sales promotion in Diwali or other time, they announce these kind of schemes. But what law says? अगर आप section 28 में देखें, section 28 it says कि the value of any benefit or perquisites, whether it's convertible into money or not, during the course of business, is to be charged as business income in the hand of the receiver. सो इन आवर केस एक्स, मिस्टर एक्स, वो यूरोप टूर तो घूम के आ गए, बट द एक्सपेंसेस, द वैल्यू ऑफ दिस यूरोप टूर, जो यूरोप टूर एक्सपेंस किया मिस्टर एक्स वाई जेड कंपनी ने, इट्स द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स. एंड रिमेंबर फ्यू थिंग्स, दिस इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. दिस perquisites, if there are employer or employee relationship, then it's taxable under that salary. वो TDS कहाँ कटेगा? सेक्शन 192 में. एंड दिस perquisites जो बेनिफिट प्रोवाइड है, बेनिफिट और perquisites है, whether it's convertible into money or not, so it's taxable in the hand of receiver. जिसको perquisites मिले हैं उसके हैंड में it's the income under section 28. बट इन मैनी केसेस लोग अपनी इनकम नहीं दिखाते, और इवन रिटर्न ऑफ इनकम में भी नहीं. दे सेड कि इट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. ये कंपनी ने, लाइक इन दिस केस XYZ कंपनी ने टूर प्रोवाइड कर दिया मिस्टर एक्स सेड कि वो तो कंपनी ने एक्सपेंसेस बियर करे थे, हमारा कुछ नहीं है, हम तो यूरोप घूम के आए. बट सेक्शन 28 सेज इट्स द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स. सो इन द बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर सेड कि लोग दिस काइंड ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी, उसमें बेनिफिट्स तो एजेंट को प्रोवाइड कर देते हैं, बट एजेंट्स इसको अपनी इनकम शो नहीं करते. सो टू ट्रैक दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, टू ट्रैक दिस काइंड ऑफ इनकम, I propose to provide TDS by the person giving the benefits. So this new section 194R in this Union Budget 2022 has been introduced कि जो benefit या perquisites during business or profession provide करेंगे, it's their duty to deduct the TDS. So let's see section 194R. सो 194R में हमने देखना है कि हु आर रिस्पॉन्सिबल, कौन प्रोवाइड कर रहा है दिस काइंड ऑफ बेनिफिट, एंड किसको प्रोवाइड कर रहा है, कितने अमाउंट पे TDS लगेगा, इफ एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, वी ऑल हैव टू सी.
तो सेक्शन 194 टॉक्स अबाउट एनी पर्सन, जो पीछे हमने डिस्कस किया था एक्स वाई जेड कंपनी, आई टोल्ड यू इट कैन बी इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म और कंपनी. सो इट्स डिस्कस अबाउट द एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, पर्सन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट. एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू ए रेजिडेंट, कि अगर वो रेजिडेंट को कोई प्रोवाइड कर रहा है कोई भी बेनिफिट आर परक्यूजिट्स, वेदर इट्स कन्वर्टेबल इनटू मनी और नोट, कि अगर कोई परक्यूजिट्स या बेनिफिट आप प्रोवाइड कर रहे हो अंडर बिजनेस और प्रोफेशन, any person provide to a resident, so then it's the duty of that person to check TDS has been deducted before providing this benefit or perquisite. And TDS कितने amount पे? 10% on the value or aggregate value of such benefit or perquisites. तो we have to see in a financial year अपने कितनी benefit or perquisites provide करें to the resident. Then we have to see aggregate or total value on, अगर एक time if you have provided only once, then only on the value, or if you provide more than once, then the total value, then you have to deduct 10%. आपको 10% करना है, and that you have to check before providing such benefit or perquisites. This is section 194R, but some provision also there provided. Provided says if the benefit or perquisites, अगर वो बेनिफिट आप परक्यूजिट आइदर यू हैव प्रोवाइडेड, या तो वो काइंड में हो सकते हैं या कैश में हो सकते हैं. कैश में होंगे तो टीडीएस नो नीड ऑफ टू डिडक्ट टीडीएस, प्योर कैश है तो इट्स आइदर प्योरली इन काइंड और पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश. देन इट सेज कि अगर आपका पार्टली इन काइंड है, पार्टली इन कैश है, एंड अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट टू डिडक्ट द टीडीएस, देन इट्स द ड्यूटी ऑफ द पर्सन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, it's the person responsible providing for such benefit or perquisite ensure that tax has been paid. So जो भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट, जैसे फॉर एग्जांपल इन अवर केस एक्स वाई जेड कंपनी, सो एक्स वाई जेड कंपनी हैज टू इंश्योर कि जो यूरोप टूर की वैल्यू है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो गया है एंड टीडीएस हैज बीन पेड. सो what that company do, XYZ कंपनी क्या कह सकती है, either he can ask Mr. X कि आप जो TDS अमाउंट है हमें पे कर दीजिए, या TDS अमाउंट आप पे कर दीजिए, या आप ग्रोस अप करके TDS आप पे कर दीजिए एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप यूरो टो के एक्सपेंड कर दीजिए. So this is the duty of the person providing such benefit or perquisite. Okay, and then provided further. Provided further, here it talks about the threshold limit. कि थ्रेशोल्ड लिमिट, आई अर्लियर आई डिस्कस अबाउट द कि अगर आप दिस बेनिफिट आर परक्यूजिट्स वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड करते हो या मोर देन वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइड करते हो इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर में यू हैव टू सी द वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है. इफ यू आर प्रोवाइडिंग वंस तो वैल्यू, मोर देन वंस द एग्रीगेट वैल्यू. अगर एग्रीगेट वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20,000 देन नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस. अगर it exceeds 20,000, then you have to deduct TDS under section 194R at the rate of 10%. तो you have to check कि आपने जो benefit और perquisites how many times in a financial year आपने provide किए the person, and then it provided also in section 194 it talks about कि अगर this provision of this section shall not be applied to a person, अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ, अगर ये इंडिविजुअल या एचयूएफ है एंड दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग दिस स्कीम, और उनकी टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रोस रिसीव्स, अगर बिजनेस है डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीस, एंड अगर प्रोफेशन है देन इट डजंट एक्सीड 50 लाख रुपीस in the financial year immediately preceding the financial year in which such benefit or perquisites has been provided by such person. So in that case also this section is not applicable 194R. And then explanation, एक explanation भी add करिए in this 194R में कि for the purpose of this section the expression person responsible for providing means the person providing such benefit or perquisite, or in case of company itself एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. मीन्स अगर आपने किसी की ड्यूटी आपको बाउंड करना है कि हु आर रिस्पॉन्सिबल, द कंपनी एंड प्रिंसिपल ऑफिसर इटसेल्फ.
क्लियर. सो दिस इज रिगार्डिंग द सेक्शन 194 आर. अगर हम इसको समरी में देखें, सेक्शन 194 आर, TDS on benefit are perquisites in respect of business and profession. So who are responsible to deduct TDS? So any person except individual NHUF. Individual NHUF business profession केस में in the financial year immediately preceding the financial year, अगर उनकी turnover groceries are the sales does not exceed 1 crore, और उसके केसेस में, प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपीस टू ए रेजिडेंट. अगर कोई बेनिफिट आर परक्यूजिट्स to a resident during the course of business and profession, and the aggregate agar value or the aggregate value exceeds 20,000 in a financial year, then to deduct a TDS at the rate of 10%. Clear? And this section 194R is applicable, will be applicable, अभी तो बजट में प्रपोज किया है, will be applicable with effect from 1st July 2022. So this is regarding the section 194R. So if you have any query, you can you can mail me, you can message me on my mobile number that we will discuss later. So till then, thank you very much. Bye bye. Take care.